Hello students, welcome to all of you in Sam Alchemy classes. As you know, IPSC nomenclature की पूरी सीरीज में हम मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स की प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर चुके हैं along with प्रायोरिटी टेबल. लास्ट सेगमेंट में उसको कंप्लीट कर चुके हैं और मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स के साथ उसकी कुछ प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस कर चुके हैं. टुडे इन दिस सेगमेंट we will discuss about nomenclature of alicyclic compound. Now straight chain compound के बाद अब हम cyclic compound में एंट्री करेंगे और फर्स्ट alicyclic then aromatic compounds को डिस्कस करेंगे. then after नेक्स्ट सेगमेंट में हम NCERT बेस्ड nomenclature की प्रॉब्लम्स का क्लास 11th एंड क्लास 12th टेक्स्ट बुक से उसका यहाँ पर सोल्यूशन डिस्कस करेंगे. So let's start for nomenclature of alicyclic compounds. Alicyclic compounds. वो like this butane. Butane ये cyclic paraffins होते हैं. Alicyclic are cyclic paraffins saturated in nature like हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन्स. ये सैचुरेटेड होते हैं. ईच पॉइंट रिप्रेजेंट अबाउट कार्बन एंड CH2, 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 CH2. साइक्लो इज यूज्ड. साइक्लो ड्यू टू इट्स रिंग स्ट्रक्चर एंड फॉर 4 कार्बन ब्यूट एंड फॉर सिंगल बॉन्ड एन cyclobutane. That's why since these are saturated in nature, that's why also called as cycloparaffins, because alkanes are also called as paraffins. So cycloalkanes are also called as cycloparaffins. Like this is 3 carbon containing cyclohydrocarbon CH2, CH2, CH2. This will be cyclopropane. Next, if 5 carbon containing cyclo is given, then 1, 2, 3, 4, 5. This ring contains 5 carbon and it will be cyclopentane. If we get 6 carbon containing ring, then it will be CH2, 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 cyclohexane. These will be saturated hydrocarbons but in ring structures, Now in nomenclature of alicyclic compound, the base depends on, or the parent chain depends on many factors, like if the chain is substituted, the ring is substituted with open chain like this CH2, CH2, CH3. If this alicyclic chain ring is substituted with a chain, open chain, then we will count the number of carbon. अगर एक रिंग और एक साइड चेन एक साथ आ जाते हैं तो हम नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करेंगे. जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मींस पेरेंट चेन को रिप्रेजेंट करेगा और रेस्ट जो है वो सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएंगे. जैसे हियर 1 2 3, बट हियर 1 2 3 4. इस एलिसाइक्लिक में रिंग में 4 कार्बन है, देयरफॉर ये पेरेंट चेन हो जाएगी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और ये CH2 CH2 CH3 सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा और ये है प्रोपिल. This will be propyl, so the name will be propyl cyclobutane. This will be the name, propyl cyclobutane.
like this. If two identical substituents are attached, alkyl groups, longest carbon chain, cyclopent, 1, 2, the total sum must be least. बहुत सारे ज्यादातर रूल्स पिछले ही रूल्स की तरह होंगे, कुछ चेंज के साथ. अगर ये सब्स्टिट्यूटेड है, बेस रिंग सब्स्टिट्यूटेड है 2 एथिल से, तो यहाँ पर हम उस डायरेक्शन से मूव करेंगे जिधर से पोजीशन मिनिमम हो 1, 2. सो इट विल बी 1, 2 डाई एथिल साइक्लोपेंटेन. यहाँ पर बेस चेन जो होगी वो ये साइक्लो होगा, इसे ही कंसीडर करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में, पेरेंट ये रिंग होगी, और 1, 2 डाई एथिल साइक्लोपेंटेन. नाउ नेक्स्ट, if we get the side chain and the ring equal in carbon number, side chain and any cyclic ring equal in carbon number, then alicyclic ring, alicyclic preferred, उसको हम प्रीफर करते हैं ओवर एलिफैटिक चेन, एलिफैटिक ओपन चेन. ओपन चेन के कंपैरिजन में हम एलिसाइक्लिक को प्रीफर करते हैं अगर दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है. सो इट्स क्लियर कि ये हो जाएगा ब्यूटिल और ये होगा साइक्लोब्यूटेन. So name will become butyl cyclobutane. Next, अगर हम सब्स्टिट्यूएंट्स को साइड चेन को ब्रांच करें like this, like this, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Since here 5 carbon are present and here 4 carbon are present, therefore this will be the base. So 1, at one position this substituent is attached, and the substituents has at 1 and 2 position 2 substituents again. So it's an example of substituted substituent or complex substituents. So first 1 within bracket 1, 2 dimethyl, 1, 2 dimethyl propyl. This will be propyl and bracket close. Now cyclopentane, cyclopentane. Taking next, if two cyclo comes and attached with each other, then one will be considered and of equal carbon. If two alicyclic ring comes and bonded together with equal number of carbon they contains, then किसी एक को हम पेरेंट चेन और किसी एक को सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे. सो इट विल बिकम साइक्लोप्रोपिल, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोप्रोपिल, साइक्लोपेंटेन. बट इसी में अगर हम बीच में कोई ओपन चेन रख दें
और इससे हम अटैच कर दें टू एलिसाइक्लिक रिंग. Here two alicyclic ring are attached with this open chain. अब इसको समझ लीजिएगा, यहां पर इक्वल नंबर ऑफ है, यहां पर 2 कार्बन की चेन है इस साइड, और यहां पर 4 कार्बन है, यहां पर 4 कार्बन है. ये साइक्लिक है और ये ओपन चेन है. Whenever two cyclic are attached with open chain, then this open chain will be considered as longest carbon chain, and 1 2 as per lowest sum rule. So 1 2 di cyclo, not butane, butyl. Why? Because these are considered as substituent. Then ethane, this will be the longest carbon chain. 1 2 dicyclobutyl ethane. Taking next, if two cyclo group comes alicyclic chain with different number of carbon is attached with each other like this. This is cyclopropyl, this is cyclopentane. So since here maximum number of carbon are present in cyclopentane and here 3 carbon are present, so जिसमें कम कार्बन होंगे वो हो जाएगी प्रीफिक्स और सब्स्टिट्यूएंट, और ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपिल. साइक्लोप्रोपिल, साइक्लोपेंटेन. जब यहां पर अलग अलग कार्बन के आ जाएंगे तो साइक्लोप्रोपिल, साइक्लोपेंटेन. नेक्स्ट, अगर यहां पर इक्वल नंबर ऑफ कार्बन की एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक both the rings join to each other, this is alicyclic, this is aromatic, then aromatic is preferred. Aromatic is preferred over alicyclic. एलिसाइक्लिक के कंपैरिजन में एरोमेटिक को हम प्रीफर करेंगे और इसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन और पेरेंट चेन में कंसीडर्ड करेंगे, और यहाँ पर एलिसाइक्लिक को हम सब्स्टिट्यूएंट्स के फॉर्म में कंसीडर करेंगे. सो इट्स नेम विल बिकम साइक्लोहेक्सिल बेंजीन, बिकॉज in aromatic this is benzene. in class 11th में पढ़ चुके हैं आप लोग. so cyclohexyl benzene. taking next like this, this is a benzene ring and here one cyclobutyl is attached, so name will become cyclobutyl benzene. Now next, if inside chain unsaturation is present and at the end or at any position alicyclic ring is attached. इस कंपाउंड को देखिए तो यहाँ पर एक 5 कार्बन कंटेनिंग एलिसाइक्लिक रिंग है जो 3 कार्बन कंटेनिंग ओपन चेन से अटैच्ड है, बट अनसैचुरेशन इज प्रेजेंट, डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन ओपन चेन एलिफैटिक चेन. सो we will give priority to double bond than cyclo, so it will be 1 2 3 3 cyclopentyl, 3 cyclopentyl prop 1 ene. This will be 3 cyclopentyl prop 1 ene. If this double bond
enters here. If this double bond enters here 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, हम इसको प्रीफर ऐसे भी करेंगे बेस में, और यहाँ डबल बॉन्ड है, सो 1 2 3 4 5. नाउ 4 पेंटिल, 4 पेंटिल. अब यहाँ पर एलिसाइक्लिक बेस है और यहाँ पर साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट्स के फॉर्म में है 4 1 2 3 4 5. पेंटिल साइक्लो पेंट 1 in. This will be the name 4 pentyl cyclopent 1 in. Now next, if substituents are attached like this, CH3 CH3 C2H5, then as per lowest sum rule 1 1 2 3, 1 1 2 3 will be the least, so 1 2 3, first ethyl as per alphabetical order, so 3 ethyl, 1 1 dimethyl cyclopentane. This will be the name 3 ethyl 1 1 dimethyl cyclopentane. If functional group are present in side chain like this, if functional group is not present here, then 3 carbon containing side chain and 3 carbon containing alicyclic ring, so we will give priority to alicyclic and its name will become cyclopropyl, propyl cyclopropane. Its name will become propyl cyclopropane. Now OH secondary suffix all is used. Functional group is attached with this open chain, so this will be considered as longest carbon chain, and here this group will be as prefix. Now 1 2 1 2 position of OH is fixed, while from right to left it is present as one position, so we will move from right to left. 1 cyclopropyl propane is replaced by all position 2. This will be the name 1 cyclopropyl propane to all. E will be replaced here by all O. Why? Because O is a vowel. Next, if here in this compound number of carbon present in this open chain are 5 and in this alicyclic ring is 4. Now if OH is not present here, just see, we will give priority to this open chain because here 5 carbon are present and it will become a substituent, so 1 cyclobutyl pentane or simply 1 cyclobutyl pentane. But here since OH is attached, so irrespective to the number of carbon present, this ring will be considered as the base or parent chain. Now this will be 2
At 2 position, the substituents pentyl 1, 2, 3, 4, 5. Pentyl is present, so it will become 2 pentyl cyclobutane is replaced by all position 1. 2 pentyl cyclobutane 1 all. Next, if the chain is of same carbon, if the chain is of same carbon 4 4, an identical group is present here. Identical group is present here. Same OH in both the cases. Then we will give priority to this. Cyclo will be the longest chain. It will be considered as the base. So this is 1, this is 2. 1, 2. At 2 positions, substituted substituent is present where 1, 2, 3, 4. So first of all, position 2 for substituted substituent, and at position 2 hydroxy. 2 hydroxy, not all. And this is butyl. Butyl, it's for substituted substituents. Now cyclo butane is replaced by all position 1, so name will become 2 within bracket 2 hydroxybutyl cyclobutane 1 all. Now next, if we get an example containing multiple functional groups अनआइडेंटिकल टाइप्स ऑफ, देन हम वहां पर हेल्प लेंगे प्रायोरिटी टेबल की. प्रायोरिटी टेबल ऑफ ऑर्डर प्रेफरेंस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स. The superior group will be considered as the principal functional group irrespective of the carbon present in alicyclic or in open chain, where the principal functional group will be attached will be considered as the parent chain. Let's take one example. Here 1, 2, 3. 3 carbon containing alicyclic ring is present, and here 1, 2, 3, 4 carbon containing open chain is present. But since carboxylic is superior functional group, carboxylic is superior functional group, so this will be considered as the parent chain, and this all will be as substituents. So position 1 for carboxylic and 2 for substituted substituents, that is complex substituents. Now position 1, 2, 3 and 4. Again add 2 ethoxy, add 3 hydroxy, and unsaturation is present at position 3. So first 2, now within bracket ethoxy come first, 2 ethoxy. Next 3 hydroxy. Next but, 3 ene, but as substituents enyl, as substituents enyl, bracket close. This is for complex substituents. 2 within bracket 2 ethoxy, 3 hydroxy, but, 3 anyl, and it will become cyclopropane. Then 1, continue it, 1 carboxylic acid. Why carboxylic? Because here when the functional groups will come over alicyclic ring,
Then for different functional groups, different suffix are used, like here for carboxylic acid, it will become cyclopropane carboxylic acid. That's why here cyclopropane 1 carboxylic acid is written. For alicyclic compounds, for certain functional groups like carboxylic, like ester, like COCl, like CONH2, like CN, like CHO, इनके लिए हम यूज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए एल्किल carboxylate, this will be carbonyl chloride. For CONH2 carboxamide, for CN carbonitrile, and for CHO carbaldehyde. So these terms will be used here in alicyclic compounds when these functional groups comes and attach with the chain. Now taking an example, here what example is given. Now in this example, this is ester. Ester is the superior functional group among all, like halogen, like ketone, ketone, like OH. So it will be the parent chain. This will be the parent chain. It has position 1. Now 2, and this will be 3. Here this ester carbon is not directly attached with this ring. This ester carbon is not directly attached with this ring. So name will be just like in aliphatic open chain. Now in comparative to this, if this ester is attached directly with this chain like this, double bond O and OH, and it becomes CH3. Comparative study of both the examples. Here, carbon of ester is not directly attached with this ring. Here, carbon of ester is directly attached with this ring. So here, 1, 2, 3, 2 chloro, this is oxo, this is hydroxy, नेम लिखेंगे एल्किल एल्केनोएट, रोज डिस्कस कर चुके हैं. एल्किल एल्केनोएट, एंड एल्केनोएट में 2 पर क्लोरो और 3 पर ये सब्स्टिट्यूएंट्स है ऑक्सो हाइड्रोक्सी एंड साइक्लोहेक्सिल. सो 2 क्लोरो, फर्स्ट ऑफ ऑल मेथिल एल्किल एल्केनोएट methyl, then 2 chloro, then 3 within bracket 1, 2, 3, 4, 5, 6. This will be 3 hydroxy
3-hydroxy, 2-oxo, cyclohexyl, cyclohexyl, bracket close. Next, propanoate, propane, E replaced by OAte, propanoate, the secondary suffix used for ester, secondary suffix used for ester. यहाँ पर इस एग्जाम्पल में ईस्टर का कार्बन डायरेक्टली इस एलिसाइक्लिक रिंग से अटैच नहीं है, इसलिए यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन साइड चेन को ही कंसीडर करेंगे और ये एक सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट्स के फॉर्म में यहाँ पर इसको ट्रीट करेंगे। सो कंपैरेटिव स्टडी अगर करें इस एग्जाम्पल की और इसकी, तो यहाँ पर एल्किल carboxylate, because carbon is directly attached with this, so this will be 1 2 and 3, it will become 3-hydroxy, methyl, first of all methyl, then 3-hydroxy, 2-oxo, साइक्लोपेंटिल, बट यहाँ पर ये पेंटेन हो जाएगा। वाई? बिकॉज यही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। यहाँ पर साइक्लोहेक्सिल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये थी, यहाँ पर इसको कंसीडर किया गया है। सो साइक्लोपेंटेन carboxylate, carboxylate, this will be the name. Here carbon of ester is directly attached with this alicyclic ring, so methyl alkyl carboxylate, so methyl, now within bracket 3-hydroxy 2-oxo oxo cyclopentane, then carboxylate, कार्बोक्सिलेट, और इसकी पोजीशन 1 कार्बोक्सिलेट, बिकॉज ये इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं होगा। टेकिंग नेक्स्ट एग्जांपल, here CHO group is the principal functional group and it is attached with open chain. So 1 2 3, at this 3 position substituted substituent is present, it will be 1 2 3 4. Now name will be 3 within bracket 1 2 2-ethyl cyclo bute, position of double bond 1, ene and enyl, bute 1 enyl. Why? Because ये पूरा ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स के फॉर्म में अटैच्ड है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन प्रोप एनल, propanal, this will be the name. Now taking next, now here this is 1 2 and 3, so at position 3-ethyl cyclo hex, at 2 position ene, and at 1 position carbonyl chloride, because carbonyl chloride will be used here. 3-ethyl cyclohex 2-ene
1 carbonyl chloride. So students, this is all about for alicyclic nomenclature. In next segment, we will discuss about aromatic nomenclature, and then after NCERT based problems we will discuss in the segments. Okay, thank you students.